Hello everyone, this is Afzalur Rahman. In our today's class, we are going to discuss about some of the important models of atom. Okay, so in our today's class, we will be discussing about Thomson's atomic model and Rutherford's atomic model. So first of all, we will discuss Thomson's atomic model. This J.J. Thomson, who discovered this electron, he also gave this first model of atom, and this model of atom is called Thomson's atomic model, or this model of atom is also called watermelon model of atom or plum pudding model of atom. Okay. So what is Thomson's atomic model? Okay, this Thomson atomic model says that an atom is a sphere consisting of a large number of positively charged particles. Okay, now this atom is a sphere consisting of a large number of positively charged particles. Positively charged particles. In which a number of negatively charged particles are embedded, or inserted to balance the positive charge. I think you have already started this model of atom in your class 9 or 10. Okay, now. So this Thomson atomic model says that an atom is a sphere consisting of a large number of positively charged particles, that is protons, in which some negatively charged particles are embedded or inserted to balance the positive charge. Okay. So this is a simple idea, or this is a simple concept of Thomson's atomic model. Okay. So you have to be positive, negative like that. Okay. So it consists of large number of positively charged particles, and some negatively charged particles are also embedded to balance this positive charge. Okay. So this model of atom is called Thomson's atomic model. But this model of atom was rejected or discarded because of some limitations, or because of some drawbacks. Okay. So what are the drawbacks, or what are the limitations of this Thomson's atomic model? The first limitation of Thomson's atomic model is that number one. So limitations or drawbacks of Thomson's atomic model. Okay, now first limitation is that this model atom could not explain the result of ionization. Okay, so first limitation is that this model of atom could not explain the result of ionization. Now question comes, what is ionization? Ionization means breaking. Okay, now. So after the breaking of this atom, okay, now, or after removing some of the electrons, what will be the result? Okay, now this is called ionization. Ionization means in an atom, if we remove some of the electrons, okay, now, so what will be the result? Okay, now we can get cations, we can get anions. Okay, but this model of atom could not explain this. Okay, now. So this model of atom could not explain the result of ionization. Number two is that this model of atom, this Thomson atomic model of atom, says that it consists of large number of positively charged particles and negatively charged particles, which means that in this atom all these masses are evenly distributed. Or the mass of this atom depends upon the whole atom. But this is not the case actually. Okay, now. Actually, this atom consists of two parts. An atom consists of two parts. Here we have nucleus. The modern science says that atom consists of two parts. One is nuclear part, another one is extranuclear part. This part is called nuclear part. Okay, the area surrounding this nucleus. Okay, now periphery of this nucleus, this is called nuclear part, and outside this nuclear part, the rest of the part, they are called extranuclear part. Okay, so an atom consists of two parts. One is nuclear part that is surrounding this nucleus, okay, including this nucleus, and another one is extranuclear part. Okay, so in this nuclear part there exists proton and neutron. Okay, so here exists proton and neutron. Okay, and in this extranuclear part there exists electron. Okay,
there exists electron. Okay, but Thomson randomly says that this atom is whole in this atom these positively charged particles are distributed evenly distributed. This means that the in case of Thomson atomic model, which indicates that the mass of this atom is wholly depend upon the total surface area, depends on the total mass of this atom. Okay, but this is not the case actually. Actually the mass of an atom depends upon the nuclear part. Okay ना, एक किसी एटॉम का मास जो है वो इस एटॉम का न्यूक्लियर पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहता है. ओके, बिकॉज दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैज सम कंसीडरेबल मास, बट दिस इलेक्ट्रॉन व्हिच एग्जिस्ट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, okay, it has negligible mass. Okay, it is less mass. Okay, so actually the mass of an atom depends on the nuclear part. Okay ना, जो थॉमसन ने कंसीडर नहीं किया. ओके, थॉमसन ने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया कि एटॉम में क्या रहता है, बहुत सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहता है, और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बैलेंस करने के लिए कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इंसर्ट और एम्बेडेड रहता है. ओके, सो which is not the case actually. Okay, so that's why this model of atom was faulty, or this is one of the limitation of Thomson's atomic model. Okay, so according to Thomson, the mass of an atom is evenly distributed over the atom, but this is not the case actually. This is not the case actually. The mass of an atom depends upon the nuclear part of the atom, where protons and neutrons exist. Okay, where protons and neutrons exist. Okay, and number 3 is that this model of atom, could not explain the result of scattering experiment carried out by Rutherford. Okay, so after this model of atom, another scientist, Rutherford, okay, he gave another experiment, another model of atom. Okay, so the observation of Rutherford's atomic model does not match with the results of this Thomson's atomic model. Okay, it has been found that this Rutherford's atomic model is more proper. Okay, so that's why this model of atom was rejected. Okay, so number 3 is that the results of, or the observations or the results of Thomson's atomic model cannot explain the results of scattering experiment carried out by Rutherford. Okay, so Rutherford ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट का, उस मॉडल ऑफ एटॉम का जो ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन के साथ थॉमसन एटॉमिक मॉडल का जो रिजल्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है. ओके, सो that's why this model of atom was rejected. Okay, first of all, first limitation is that this model of atom could not explain the result of ionization. Okay ना, एक एटम आयनाइजेशन होने के बाद क्या रिजल्ट क्या, what is the ultimate result. Okay, this model of atom cannot explain. Okay,
नंबर 2 इज दैट अकॉर्डिंग टू थॉमसन ने क्या बोला, एक एटम जो है उस एटम के अंदर बहुत सारा पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, बट दिस इज नॉट द केस। अगर ऐसा केस होगा तो एक एटम का मास जो है वो पूरा टोटल एटम के ऊपर डिपेंड करेगा, बट दिस इज नॉट द केस एक्चुअली दिस एटम कॉन्स्टिट्यूट टू पार्ट्स, वन इज न्यूक्लियर पार्ट, अनदर वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दिस न्यूक्लियर पार्ट में क्या रहता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैज सम कंसीडरेबल मास, ओके। सो दैट्स व्हाई द मास ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन दिस न्यूक्लियर पार्ट, जो थॉमसन ने कंसीडर नहीं किया। सो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन। एंड थर्ड लिमिटेशन इज दैट थॉमसन का एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है, जो रिजल्ट है, इट डज नॉट मैच विद द रिजल्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट वाज क्रिएटेड बाय रदरफोर्ड, ओके। इट हैज बीन फाउंड दैट, ये देखा गया कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है, जो एटॉमिक मॉडल है, दिस इज मोर प्रॉपर देन दिस थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दैट्स व्हाई दिस थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज रिजेक्टेड, ओके, और डिस्कार्डेड, ओके। So these are the limitations of Thomson's atomic model, okay. Next we are going to discuss about Rutherford's atomic model, okay. Next one is Rutherford's atomic model. You can note it down or you can take the screenshot. Next, Rutherford's atomic model, okay na. I think you have already studied this Rutherford's alpha scattering experiment in your class 9 or 10, okay na. So in this alpha scattering experiment of Rutherford, what Rutherford did, okay na, he took one gold foil, okay, and bombarded this gold foil with alpha particles. He bombarded this gold foil, okay, with alpha particles, and he found some observation, okay, and based on this observation or based on these results, he gave the model of atom. He gave the model of atom, okay. So next one is Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model, ओके ना। सो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया, इस गोल्ड फॉइल को अल्फा पार्टिकल्स, नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? द अल्फा पार्टिकल्स आर one type of radiations, okay. So this alpha particles contains some positively charged particles, or it contains positively charged particles of helium nucleus, okay. So उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया, and after taking this gold foil, he bombarded this gold foil. Suppose this is gold atom. ये गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल लिया, इस गोल्ड फॉइल में क्या रहेगा, गोल्ड का एटम रहेगा, ओके, एंड ही स्ट्राइक दिस गोल्ड फॉइल और गोल्ड एटम विद अल्फा पार्टिकल्स। इस गोल्ड एटम को उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स से स्ट्राइक किया, ओके। Here you have nucleus, so here you have alpha particles, and after bombarding this gold atom with alpha particles, he found that most of these alpha particles they pass out without any deflection, okay. So ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डायरेक्टली पास आउट किया बिना डिफ्लेक्ट होते हुए, ओके। So these are the undeflected alpha particles. These are the undeflected particles, okay, alpha particles. And he also found that some of the alpha particles, they are deflected with a small angle. They are deflected with a small angle, and some alpha particles are returned back directly. Some alpha particles are returned back directly. This is 180 degree, returned back directly, and based on these observations, he gave the model of atom. He gave the model of atom, okay. So these are the alpha particles. Here we have alpha particles. Okay, so this is the, suppose this is the gold atom, okay na, gold atom, AU gold atom, okay, and these are the beam of alpha particles. These are the beam of alpha particles, okay. Now question comes, what are alpha particles? These alpha particles are nothing but these are some radiations, okay, that are emitted by any radioactive substance, okay, polonium, okay, uranium, okay, like that, okay. So you strike this gold atom or gold foil with alpha particles, okay. Now in these alpha particles, okay, now it contains helium nucleus, He2+ ion,
It contains He2 plus ion. Now what is He2 plus ion? Now here is suppose if we have one helium atom, okay, this helium atom contains 2 electrons. This is 2 4. It contains 2 proton. It contains 2 proton, 2 electron and 2 neutron. 2 neutron. Okay. Now if from this here, so here you see it contains 2 electron. Now from this helium nucleus, from this helium atom, if we replace 2 electrons, so what we are left with? We are left with only helium nucleus. We are left with only helium nucleus. It is helium He2 plus He2 plus ion. He2 plus ion. So in these alpha particles, this helium nucleus are there. Okay. So when he struck this gold atom with alpha particles, positively charged particles, he found that the alpha particles, they passed out without any deflection. Most of the alpha particles, they passed out without any deflection. And also he found that some of the rays are deflected with a small angle. कुछ रेडिएशन ऐसा है जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया, एंड कुछ ऐसा रेडिएशंस भी था जो डायरेक्टली 180 डिग्री एंगल में भी रिटर्न बैक किया. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ही गेव द मॉडल ऑफ एटॉम. ही गेव द मॉडल ऑफ एटॉम. ओके ना, एज ही फाउंड दैट these most of these rays are passing out without any deflection, so he thought that this atom as a whole is mostly empty. he found उन्होंने सोचा कि एटॉम जो है वो मोस्टली एम्प्टी है, क्योंकि मैक्सिमम जो रेज है वो डायरेक्टली पास आउट किया. ओके, नंबर 2 इज दैट some of the rays are there deflected with a small angle. Okay, small angle. So उन्होंने देखा कि कुछ रेज जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया. ये जो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो उनको लगा कि ये सेंटर, ये एटॉम के सेंटर में ऐसा हो सकता है कुछ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रह रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा. इसकी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल जो है वो सेंटर के पास जाने के बाद वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, और कुछ रेज जो डायरेक्टली फ्रंट में जा रहा है वो रिटर्न बैक कर रहा है. ओके, सो फ्रॉम दिस he concluded that this atom may contain some positively charged particles in the center. Okay, and he named this positively charged particle as nucleus. Okay, so based on this experimental observations, he gave the model of atom. Okay, now we are going to discuss this model of atom. Okay, that was given by Rutherford. Okay, so these are the beam of alpha particles. This is the undeflected. These are the undeflected alpha particles. Undeflected alpha particles. These are the small deflected alpha particles. Particles with small deflection. Okay, ये भी undeflected alpha particles है. These are alpha particles with small deflection. Okay. And these are the alpha particles with strong deflection. Okay, so these are the alpha particles with strong deflection. Okay, alpha particles with strong deflection. Okay, here we have figured Rutherford's model of atom. Okay, so based on this experimental observation, Rutherford gave the model of atom. Okay, now we are going to discuss, or we are going to write the model of atom, the postulates that were given by Rutherford. Okay, so number 1 is that since he found most of the alpha particles are passing without any deflection, so उनको लगा an atom as a whole is mostly empty. उनको लगा कि atom जो है वो mostly empty है. Okay, so first postulate is that an atom as a whole is mostly empty. Okay, number 2 is that क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इस एटॉम के सेंटर के पास जाने के बाद स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट किया, और कुछ रेज जो है वो डायरेक्टली रिटर्न बैक किया. ओके, तो उनको लगा कि ये जो एटॉम है, एटॉम के सेंटर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो सकता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज रेज जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके, सो नंबर 2 इज दैट ए पॉजिटिवली चार्ज body is located at the center of the atom, which is called nucleus.
which is called nucleus, जिनको उन्होंने क्या बोला, which is called nucleus, उन्होंने क्या नाम दिया, उसका नाम दिया nucleus, which is called nucleus. Number 3 is that the radius of this nucleus is very small. Number 3, the radius of this nucleus, the radius of the nucleus is very small, compared to the radius of the atom. The radius of the atom. एटॉम की जो रेडियस है उसकी कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो बहुत छोटा है. ओके, द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ द एटॉम. ओके, नंबर 4 इज दैट negatively charged electrons are distributed around the nucleus. Okay, negatively charged electrons are distributed around the nucleus. And number 5 is that these negatively charged electrons are distributed around the nucleus. Okay, and number 5 is that this negatively charged electron, they are not stationary, they are continuously revolving around the nucleus in a circular path. Okay, number 5 is that the electrons, the negatively charged electron, or directly you can write the electrons are not stationary. They are continuously revolving around the nucleus in a circular path. Okay, so these are the some of the postulates that was given by Rutherford. Okay, number 1 is an atom as a whole is mostly empty. Okay, number 2 is that a positively charged body is located at the center of the atom, which is called nucleus. Okay, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, nucleus नाम दिया. The radius of this nucleus is very small. nucleus का जो radius है वो बहुत छोटा है compared to the radius of the atom की radius के comparison में. Okay, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. सपोज हम एक फुटबॉल ग्राउंड कंसीडर करते हैं, पूरा एक फुटबॉल ग्राउंड, और इस फुटबॉल ग्राउंड की सेंटर में यहाँ पे क्या, सपोज एक बॉल है. ओके, फुटबॉल है यहाँ पे. ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियस एंड द टोटल फुटबॉल ग्राउंड विल कंसीडर्ड एज एटम. ओके, इस फुटबॉल ग्राउंड के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. ओके, सो ऐसा ही है. दिस रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द एटम. And fourth is that negatively charged electrons are distributed around the nucleus. इस nucleus की सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी. ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेशनरी नहीं है, फिक्स नहीं है. दे आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली इस न्यूक्लियस की सराउंडिंग में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है. ओके, so these are the observations, or these are the postulates that was given by Rutherford. Okay, but this Rutherford model of atom was also rejected or discarded because of some limitations. Okay, इस Rutherford atomic model में भी सब limitations रहा, जिसकी वजह से this model of atom was after that rejected. Okay, or discarded. Okay, now we will study about the limitations or the drawbacks of Rutherford's atomic model. Now, what are the limitations or what are the drawbacks? Number 1 is that एक साइंटिस्ट, उनका नाम है मैक्सवेल. ओके, वन थ्योरी इज दैट मैक्सवेल्स फेमस थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी. ओके ना, जो मैक्सवेल्स क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स बोलते हैं अगर किसी चार्ज पार्टिकल्स है, ओके ना, वो इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज रोटेटिंग, ओके ना, कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की इन्फ्लुएंस में अगर रोटेट कर रहा है, देन इज दिस चार्ज पार्टिकल विल एमिट रेडिएशन. मैक्सवेल ये प्रूफ किया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरी चार्ज पार्टिकल्स की इन्फ्लुएंस में अगर रोटेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, देन इट विल एमिट रेडिएशन, रेडिएशंस. ओके, सो अगर ये कांसेप्ट मैक्सवेल का कांसेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, सो रदरफोर्ड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है और ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में. ओके, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल. नाउ इफ इट रोटेट,
if you rotate, if this charged particle is rotate, if it rotates, then it will emit radiation. Okay, it will emit radiation, जो मैक्सवेल ने बोला. अगर ये चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, then it will emit radiation or it will emit energy in the form of radiation. और so it will emit radiation. ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा in the form of radiation. अगर ये इलेक्ट्रॉन being a charged particle, अगर ये एनर्जी एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है, then it will lose a part of its energy. वो इलेक्ट्रॉन उसका जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, उस टोटल एनर्जी से इट विल लूज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, and after losing energy it will ultimately, it will follow a spiral path, it will continuously lose energy and it will follow a spiral path, and it will ultimately fall into the न्यूक्लियस. ये अल्टीमेटली जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा, तो अल्टीमेटली एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कहाँ पे न्यूक्लियस पर जाके गिर जाएगा. ओके, सो ये जो रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये इट डज नॉट मैच विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सवेल. मैक्सवेल का जो थ्योरी है, प्रूवन थ्योरी जो है, उसके साथ मैच नहीं कर रहा है. ओके, so the first limitation is that Maxwell says that Maxwell's electromagnetic theory of radiation says that this rotating charged electron will emit radiation, and thus it will release its energy and it will ultimately fall into the nucleus. Okay, so this Rutherford model of atom is faulty. Okay ना, so इस Rutherford atomic model में क्या है, कुछ faulty है, error है. Okay ना, this is the first limitation. Number two is that this Rutherford's atomic model cannot explain the discontinuous spectra. Okay ना, now question comes, what is discontinuous spectra? हम लोग जितना ह्यूमन बींग्स है ना, सबके सब में क्या रहता है, फिंगरप्रिंट. ओके, एंड सब ह्यूमन बींग्स का क्या है, फिंगरप्रिंट जो है वो डिफरेंट रहता है, सबका फिंगरप्रिंट डिफरेंट रहता है. ओके, नाउ फॉर दिस एटम ऑल्सो, जितना सारा एटम्स है, सब एटम्स का एटॉमिक स्पेक्ट्रा रहता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा. ओके, और ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो डिफरेंट एटॉमिक स्पेक्ट्रा रहता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा. बट विद द हेल्प ऑफ दिस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दिस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा ऑफ एटम. एटम का जो डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा है उसका वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है दिस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. सो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन. एंड थर्ड लिमिटेशन इज दैट रदरफोर्ड ने वैसे ही बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है, रिवॉल्व कर रहा है ना, बट ही हैज नॉट एग्जैक्टली मेंशन द पाथ ऑफ द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. रदरफोर्ड ने वैसे ही बोल दिया इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने क्या बोल दिया, उन्होंने क्या बोला, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर कंटीन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. ये है सपोज एक एटॉम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है कंटीन्यूअस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, बट ही हैज नॉट मेंशन द एग्जैक्ट पाथ और एग्जैक्ट ऑर्बिट इन व्हिच ऑर्बिट दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. उन्होंने एग्जैक्ट ऑर्बिट मेंशन नहीं किया, कौन सा, वेदर दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट, वेदर दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सेकंड और थर्ड ऑर्बिट. ओके ना, सो ही हैज नॉट एग्जैक्टली मेंशन द पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है उसको मेंशन नहीं किया. ओके, सो दीज आर द लिमिटेशंस. Okay, because of this limitation, this Rutherford's atomic model was rejected or discarded. Okay, so I'm going to write the limitations of this Rutherford's atomic model. Okay, so these are the postulates of Rutherford's atomic model, but ये postulates से limitations ज़्यादा important है. So number one is that पहला लिमिटेशन हम लोगों ने क्या मेंशन किया था, पहला लिमिटेशन नंबर वन इज दैट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, the rotating charged electrons would emit radiations continuously full stop. Now if it is so, then the charged electron will lose energy
energy and will ultimately fall into the nucleus. Fall into the nucleus. Okay. So this is the first limitation. Okay. Number 2 is that this model of atom cannot explain the discontinuous spectra of atom. And number 3 is that Rutherford is not mentioned the exact path of rotation of electron. The path of rotation of electron. Okay. So उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कौन सा ऑर्बिट में कौन सा पाथ में रोटेट कर रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोला. ओके. So because of these limitations, this Rutherford model of atom was rejected. Okay. So for today's class up to this. Okay. So in this class what we have discussed so far now, we have discussed Thomson-Atomy model. So what is Thomson-Atomy model? This Thomson says that this atom consists of a sphere of positively charged particles. Okay, in which some negatively charged particles are embedded to balance the positive charge. So this is some simple concept or opinion or model that was given by Thomson. But this model of atom was rejected because of some limitation. What is the limitation? The first limitation was that this model of atom cannot explain the result of ionization. Okay, now number 1. Number 2 is that according to Thomson, this in an atom, these protons and electrons are evenly distributed. Now if it is so, then the total mass, the mass of this atom will be dependent on the total atom. But this is not the case actually. Actually the mass of the atom depends upon the nuclear part of the atom in which the protons and neutrons exist. Okay. And number 3 is that this model of atom, the observations of Thomson-Atomy model does not match with the observations made in the alpha scattering experiment of Rutherford. Okay. This Rutherford experiment, observations of Rutherford experiment was found to be more precise. Okay now. So that's why this model, Thomson-Atomy model of atom was discarded. Second one is that Rutherford's atomic model. So Rutherford did one experiment with gold foil. He has bombarded this gold foil with alpha particles. Okay now, and he found most of these alpha particles they passed out without any deflection. Small radiations. A few of the radiations they are scattered with a small angle. A few were returned back directly. So based on that, he gave the model of atom. The first postulate was that the atom as a whole is mostly empty. Number 2 is that a positively charged body is located in the center of the atom, which is called nucleus. Number 3 is that the radius of this nucleus is very small compared to the radius of the atom. Okay. And number 4 is that the negatively charged electrons are distributed around the nucleus. Okay. And these electrons are not fixed. They are continuously revolving around the nucleus. Okay. So these are the observations or these are the postulates that was given by Rutherford. But because of some limitations, because of some drawbacks, this model of atom was also rejected. Now what are the drawbacks? Here I have mentioned. The drawbacks are according to Maxwell ने क्या बोला कि अगर कोई charged particles होता है, so this charged particles on rotation it will emit radiation, it will emit energy in the form of radiation. अगर वो energy emit करता है तो energy lose करेगा, ultimately it will fall into the nucleus. तो वो जाके ultimately nucleus में गिर जाएगा. So this Rutherford model of atom is faulty. Okay, so Maxwell का जो observation है Rutherford के observation के साथ match नहीं हो रहा है. Okay, so number 1. Number 2 is that this model of atom cannot explain the discontinuous spectra of atom. Atom का जो discontinuous spectra है, this cannot be explained with the help of Rutherford's atomic model. The second limitation. And third limitation is that Rutherford's model has not mentioned the exact part of rotation of the electron. Electron exactly कौन सा orbit में कौन सा path में exactly rotate कर रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ बोला नहीं गया. Okay, so that's why this Rutherford's atomic model was faulty. Okay. So for today's class, up to this, in our next class we will be discussing about Bohr's atomic model, its limitation, and after that we will discuss about the quantum mechanical model of atom. Okay. So thank you everyone.